Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक जयंतो दास। जयंतो, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Warm welcome, Jayanta. थैंक यू राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic indices log gain of around 1%. Sensex closes near 61,750 mark. Nifty settles above 18,250 level. Brent crude prices hover around $72 per barrel and gold price rises to trade around 61,300 rupees per 10 grams for June contract at MCX. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% ऊपर आए। सेंसेक्स 61,750 के नजदीक हुआ बंद। निफ्टी 18,250 के स्तर से ऊपर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल के आसपास आई और एमसीएक्स में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य बढ़कर 61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों लगभग 1% बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 61,750 के नजदीक बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,250 के स्तर को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अंत में सेंसेक्स आज 556 अंक यानी 0.91% की बढ़त लेकर 61,749 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 166 अंक यानी 0.92% बढ़कर 18,256 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी अच्छी खासी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.82% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.83% ऊपर आकर बंद हुआ। The market bounced back after a day of weakness. The key domestic indices today witnessed gains to close at around 1%. The BSE Sensex closed near 61,750 mark, while the NSE Nifty settled above 18,250 level. The Sensex rose 556 points or 0.91% to finish at 61,749. The Nifty at the National Stock Exchange also surged 166 points or 0.92% to end at 18,256. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.82% and the small-cap index gained 0.83%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 firms rose while 8 fell. Bajaj Finance was the top gainer as it surged 3.4%, followed by HDFC, which climbed 2.6%, and HDFC Bank rose 2.1%. On the other hand, IndusInd Bank plunged 1%, Nestle India slipped 0.8%, and Tata Motors fell 0.7%. In sectoral indices at BSE, all sectors were positive except the FMCG sector, which was down by 0.1%. The financial services and telecommunications, both indices gained 1.4% each. Services sector surged 0.8%. The overall market breadth was positive as shares of 2,244 companies advanced, while those of 1,278 companies declined. A total of 118 shares
remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.04% घटकर 101.31 पर कारोबार कर रहा था। जयंतु, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। यदि हम पिछले 3-4 दिनों में देखें तो एक दिन तेजी एक दिन गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। आज बढ़त हम देख रहे हैं। किस अर्थों में हम ले आज के कारोबार को? देखिए, मोटी तौर से एक तो ये खुशी की बात ये है कि यूएस फेड रेट्स का जो 25 बेसिस पॉइंट का हाइक का अनाउंसमेंट किया गया है, विच इज एज पर एक्सपेक्टेड लाइन। ये नहीं कि उसमें कुछ अलग से सरप्राइज था, लेकिन उम्मीद ये किया जा रहा है कि 10वीं रेट हाइक के बाद शायद एक पॉज आएंगे। तो इसमें खास करके इस वक्त मैं अपना श्रोताओं को ये बताना चाह रहा हूँ, पॉज हुए नहीं रेट हाइक में, रेट हाइक हुए बेशक है, लेकिन उम्मीद किए जा रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ साथ घरेलू बाजार में हमारा बेस्ड ऑन मैक्रोइकोनॉमिक पैरामीटर्स, ओवरऑल मैक्रोइकोनॉमिक पैरामीटर्स पिछले 2-3 महीने का दौरान, आप जीएसटी का फिगर्स देखिए वगैरह वगैरह, वो सारे देखते हुए मार्केट में एक अलग से उछाल आया हुआ है। और मैं मानता हूं कि इस वक्त दिस इज अ गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स अगर आप चाहे तो। रीएलोकेशन ऑफ स्टॉक्स, रीएलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में लगातार पिछले 4-6 हफ्ता में मैं बेशक इस प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि ये सही समय है। और इसका फायदा उठा के अगर मार्केट्स में इस वक्त आपको एक अलग से उछाल मिला हुआ है और अगर आपको लग रहा है आपका निवेश का जो स्टॉक्स है उसमें आप बेशक कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल के वही पैसा कहीं और रिएलोकेट करना चाहते हैं, एक अच्छा समय है। Okay, Jento, following a widely expected rate hike by the Fed and consistent foreign support, the domestic equities today resumed their bullish momentum, and there were gains, as you mentioned rightly, across major sectors. Do you see this momentum sustaining in the coming days? If so, which are the sectors where we will see a lot of bullish tempo happening? Well, Rajesh, this is typically we are almost in the middle of our calendar year. And we are, about to end our first fiscal quarter around June, which is around 44 days, 45 days away at this point of time. A bit more than that, sorry. In terms of direct question about how do we see the market momentum going up from here or going down from here, I guess I'll divide it into 3 zones. My first zone will be the next 3 months immediate. My next zone will be typically around 6 to 9 month period, which will take us till Jan-Feb. And my third zone will be the long-term period, which is, normally we call the technically short-term, mid-term, for the next 12 months. But if I define it as beyond 2023-24 fiscal year, that's April 24 onwards. Now in the next 3 months, I do expect there will be some positive movements upwards in the market, driven by sectors like financial services, banking, which already is in the lead right now. Sensex heavy stocks, I need not mention them. Everyone knows what are the Sensex heavy stocks in the market. Are good buys at this point of time, a good point to even book your profits and, as I said, reallocate your returns from these profits to other sectors if you want. IT is a bit down, and obviously the weakness in IT has been prevalent with a lot of IT stocks taking beating across the board. I still believe if you are looking for a 2-year investment period, there are extremely good buys at good prices. So go for bellwether IT stocks. Don't just pick up any IT stocks which you want. Go for the bellwether top 5-6 stocks which are giving a market direction in that sense. Okay. In terms of weaknesses, the monsoon season is more or less, I guess, go to normal as per initial indications. They are yet to set in though, in a definitive way in the markets. So I do extend that in the next 2 to 3 months, the momentum will remain unless we see a drab monsoon. Okay. So what about, since you mentioned banking and IT, 2 sectors to look out for, they have been, in fact, the public sector banks were among the best performers
in April, while private bank stocks underperformed. Having said that, how do you see the overall outlook for the sector, which a lot of people say it's positive as earnings growth prospects remain bright? See, for banking per se, Rajesh, they had a dream run last year, especially the PSU bank, at least 8 to 10 of the stocks of the PSU bank sector. In the private bank sector, I do believe there's a lot of promise in our top 3 banks in the private sector, in addition to other banks which are also listed, where I count them out. But in terms of growth perspective, as I kept on saying over the last 18 months or so, they are extremely good buys, and they are good buys for even mid to long term. The good thing which has happened is most of these banks have generated very good returns for investors even in the short term, for 3 months, 6 month period. So taking a cue from there, I guess if you invest wisely enough in banks and not blindly, because there will be some PSU banks which will drag you down. There are some private banks which has dragged you down. So if you invest your money very wisely across the private and PSU banks, especially the lead one, I still believe there is a comfortable growth story ahead, with little hiccups here and there, but the middle to long term is a very defined growth story. जयंत, आपने अभी कह लें कि यानी पिछले कार्यक्रम में भी और आज भी कहा है कि यदि आप मुनाफा वसूलना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बदलकर या अपने धन का निवेश दूसरे स्थानों पर करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा समय है। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि एक और जब कह लें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी स्थिरता के आसार दिख रहे हैं थोड़े से, और घरेलू मोर्चे पर जो ताजा आंकड़े आए हैं विशेष रूप से जीएसटी कलेक्शन का, वह संकेत दे रहा है कि अच्छी बढ़त हम देख रहे हैं। तो वैसे में अभी मुनाफा वसूली के लिए क्या बहुत सही समय है या होल्ड करके रखना अधिक उचित रहेगा? देखिए, अगर अगले 3 महीना का अवधि है आपका पास, तो बेशक मुनाफा वसूली इस वक्त आप राइडिंग दिस वेव, कह रहा हूँ कि कल ही जाके मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन राइडिंग दिस वेव क्षेत्र विशेष में या स्टॉक विशेष में आप जाके, अगर आपका जब भी कोई भी निवेशक कोई स्टॉक में पैसा लगाता है, वो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न उम्मीद करते हैं स्टॉक से जी। तो अगर वो कहीं ना कहीं जाके आंकड़े क्रॉस हो गया है, तो उसमें मुनाफा वसूली एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप होता है। ये है कि जरूर अगर आप 18% रिटर्न एक्सपेक्ट करो, उसमें 25-30% आपको वापस आ गया, आप सोच रहे शायद ये 60 दे दे, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, एक रैशनल निवेशक के लिए अगर जो वो टारगेट रखता है कि इतना मेरे को पैसा कमाना है स्टॉक से, और अगर वो क्रॉस कर गया, बेशक बिजनेस से कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने पिछले बार भी मेरे को पूछे थे जी, एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स में और कहाँ क्या हो सकता है। तो हमने बैंक एफडी का बारे में बात की है जी। अगर हम रेट पॉज का बात कर रहे हैं, जो शायद अगले 2-3 महीने में ट्रिगर होने वाला है, और उम्मीद ये किया जा रहा है कि पहला रेट कट फेडरल बैंक के द्वारा शायद सितंबर में शुरू होगा। हालांकि उसमें कोई कहीं पे कोई अलग से इंगित आया नहीं है, लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। तो दिस इज नाउ आई गेस योर फाइनल चांस टू रीएलोकेट आपका कुछ पोर्टफोलियो बैंकिंग एफडी में जी जी, क्योंकि अभी भी काफी सारे अच्छे बैंक 9% के करीब आपको ब्याज दर में एफडी का वापसी आपको कर रहे हैं ओवर 1.5-2 ईयर टाइम, और इट्स एक्सीलेंट रिटर्न मैं मानता हूँ। हाँ, स्टॉक्स में बेशक कुछ जगह में आप ज्यादा कमा सकते हैं, कुछ कम कमा सकते हैं, बट इट इज नेचुरल रिटर्न। तो इसमें आप बेशक निवेश कर सकते हैं। आई बिलीव 9% अगर आपका से 100 रुपया का पोर्टफोलियो है, उसमें से अगर 15-20 रुपया में अगर 9 फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलता है, इट्स अ वेरी गुड मिक्स जी। Okay. So what about the FIIs, Jayanto? They have been the net buyers of Indian equities, buying roughly about 1,400 crore on Wednesday, and up till May, which is just 4-5 days, they have bought 10,850 crore of Indian equities. So given this scenario, if you were their client, would you be asking them to book profit in the Indian markets as the US recession looks imminent? And this second part of my question is something that I would like to talk about as well. See, Rajesh, if you look very closely at most of the global reports, none of them have changed. Even reports on Indian Sensex and where they believe the Sensex will be in the calendar year,
end of the calendar year, which is December, while the markets at present are quite, euphoric in that sense that they have started moving upwards decisively. But the overall targets and expectations from where the markets will be are almost the same from till December. In addition, there are very strong reports now which says that U.S. recession is imminent. And there was also a very damaging report which came out last week, somewhere which stated that there may be a default. Now, that can be a far what I am saying. They may be overdoing a lot of things which otherwise might not happen. But the U.S. recession story is very much almost a real story, if not a story about to happen. That's one point. Secondly, the U.S. banking market or even the U.S. banking scenario is not a very healthy point at this point of time. So as I said, even I expect that next 2-3 months can be a good market, a good time to sail on in terms of investment. The overall period if the U.S. recession figures actually come true, these markets will go in for a tumble. And coming back to the FII question of yours, when markets start tumbling, they will be the first one to pull out money, because they would like to book profits. But I also believe there will be FIIs who would be smartly playing this market at this point of time. While playing sounds a negative word, when I say playing, I mean playing their own money. It's not that playing the Sensex or something like that. In all this, there is also a good news which came yesterday on the Rail Vikas Nigam Limited, which has been granted the Navratna status. That is going to give a lot of powers to this Navratna, and it's a good news for the economy as such. See, RVNL has been a giant in terms of creating rail infrastructure. There is no doubt on that in terms of their project deliveries, in terms of quality of project deliveries, and in terms of taking a lead in creating our whole railway infrastructure in the country. So taking a cue from there, obviously, it's good to have another Navratna added. And specifically for the PSU set of stocks, it's a good booster because it's a brand. So there's no doubt on that. So the company itself is a brand, and being a Navratna is a secondary, a much larger tag which you get in terms of performances. So I do believe there will be some renewed interest in terms of the infrastructure sector, not only just limited to RVNL, but also focused on the infrastructure sector per se as a whole. अच्छी खबरों की चर्चा चली है तो जयंतो हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे श्रोताओं के लिए कि देश में कोयले का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में 22% से अधिक बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने भी कोयला उत्पादन में जो वृद्धि हुई है इसके लिए सराहना की है और बधाइयां दी हैं। कुल मिलाकर कोयले के उत्पादन में हमारी क्या स्थिति है और जो ऊर्जा उत्पादन में खासतौर से जो ताप ऊर्जा की हमारी आवश्यकता है उसमें हम अक्सर आयात करने के लिए बाध्य होते थे या अभी भी कह लें कुछ हद तक हमें आवश्यकता पड़ती है, उसमें हमें कितनी मदद मिल सकेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि बेशक वन ऑफ द हार्डकोर कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैज बीन कोल प्रोडक्शन, और इस वक्त कोल प्रोडक्शन में वृद्धि का साथ साथ उस आगे जो फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट होता है इकोनॉमी में, फर्दर लिंकेजेस क्रिएट करके उस पर आंकड़े का रूप से एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अगले 10 साल में फोकस होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, और साथ में ऑल्टरनेट एनर्जी किस हद तक हम उसको नियंत्रित करके उसको आगे बढ़ाते हैं, और हमारा जो कोर सेक्टर्स है वो धीरे धीरे ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हुए वो एक ग्रोथ स्टोरी का फोकस रहेगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने भी कई बार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी बताया उन्होंने कि इस डिकेड में India should take a lead in terms of alternate fuels, in terms of alternate energy, not only finding them, increasing their production, but also as the economy increasing its dependence on alternate energy. So I think that will be the story to look forward to in the next 10 years. आइए खबरों को विस्तार दें, चलें शेयर बाजार की ओर। वैश्विक शेयर बाजार पर सबसे पहले नजर देते हैं और चलते हैं एशियाई शेयर बाजार, जहां आज दक्षिण कोरिया को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में लिवाली तेज देखने को मिले। निवेशकों के लगातार लिवाली से हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 1.3% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई।
उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% ऊपर आ गया। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। हालांकि बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां नरमी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.8% घाटे के साथ चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.9% की कमी थी, जबकि जर्मनी का डेक्स भी 0.07% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। U.S. stocks ended lower yesterday, reversing gains after comments by Federal Reserve Chair Jeremy Powell. The Dow Jones Industrial Average declined 0.8%, the S&P 500 fell 0.7%, and the Nasdaq Composite Index slipped 0.5%. Jayanta, very briefly, what are your expectations? Will the Fed's first rate cut come in September 2023, which you mentioned a while back, or do you see it happening only in March 2024? I'm quite positive that it will happen in March 2024. And if you ask me very frankly, while some of the markets do expect that it will start as early as September, but I don't think it's going to happen that soon. Okay. Moving on, the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that the India-US partnership is the defining moment of the 21st century. During his inaugural address at the American Chamber of Commerce in India, AmCham's 31st annual general meeting in New Delhi, Mr. Goyal talked about diversifying and deepening India-US trade and investment ties for mutual growth and prosperity. The minister noted that the bilateral trade between India and the US has been the highest in the last couple of years. He added that it is aimed to increase multifold in the coming years. He said the target of $2 trillion exports by the year 2030 is doable with the increasing eminence and recognition of India across the world and with strengthening partnerships with like-minded countries having shared values like the US. Jayanta, what should we expect from the renewed India-US partnership and the doable $2 trillion exports by the year 2030? Well, it has always been one of the most important trading partners, if you look at it in terms of India as a bloc. And as I said, with India being one of the largest, not one, is the largest populated country now in the world, there are huge markets for US to explore. In addition, the depth of businesses which Indian businesses have gone and entered into the US markets in terms of markets, say in the IT sector or partly in the manufacturing sector and other areas, in services hugely. I guess there is a huge scope for extending this further. And as the Commerce Minister has actually stated, this is not a far-fetched dream to reach the particular target we will look forward to do. जयंतु, यहाँ पर हम देश का जो निर्यात का परिदृश्य है वहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि विश्व की जो अभी आर्थिक कह लें कि गतिविधियां चल रही हैं और जो हालात बन रहे हैं दुनिया भर में, उसमें हमारे निर्यात को इस वर्ष के लिए, ये जो वित्तीय वर्ष होगा, उसमें हम किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं और कहाँ हमारे लिए नए अवसर बनते आपको दिख रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि अगले 6 से 9 महीने तक काफी सारी चीजों में फर्क शायद आ जाए, क्योंकि यूक्रेन वॉर का वजह से बहुत सारे नए मार्केट्स इंडिया के लिए अलग से खुले। जैसे अब इंडिया, आपको सबको पता है, तेल का पदार्थ का अलग से एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उसको रिफाइनिंग करके। इसके अलावा मैं मानता हूं कि अगर यूएस रिसेशन ट्रिगर होता है तो इट विल क्रिएट अ ग्लोबल स्लम डाउन, इफ नॉट अ हेवी स्लम डाउन, तो उसमें बेशक आपके एक्सपोर्ट्स का मार्केट ज्यादा बेशक अफेक्ट होगा। तो ये स्थिति देखते हुए अगले 6 से 9 महीने का ट्रेंड बताना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त मैं मानता हूं कि जिस तरह का स्थिति होकर रखा है एक्सपोर्ट्स का, इसमें ग्रोथ स्टोरीज बरकरार रखने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन चैलेंजेस दो मोटे हैं और उसके ऊपर हमें उम्मीद करना पड़ेगा किस हद तक ये एक्सपोर्ट्स का दिशा होता है फाइनली। Okay, Jayanta, do you think the rate hike is likely to complicate the situation given the current state of banking industry in the United States? It's not complicated. It's not going to soothe any new situations or any situation. That's for sure. Complication is a very defined word, and it means that it will add into the complexes
or the complex nature of how banking treads forward to. But then, as I said, there are many banks which has got a soft underbelly now because of the continued rate hikes and because of how the U.S. economy is shaping up because of this rate hike. We all know how two banks collapsed. And obviously, if a major bank or one or two collapse from here on, there could be a domino effect. And as I said in the initial part of the program, the U.S. banking sector is not in a very healthy, fine, fresh state to speak of at this point of time. Whether they'll be able to absorb the next 6 months of a rate pause, if not a rate hike, is something that ought to be seen. जयंत, बैंकिंग क्षेत्र की बात चली है और आप हैं हमारे साथ, तो हम समझना चाहेंगे कि एडीबी की जो बैठक चल रही है दक्षिण कोरिया में 56वीं बैठक, सालाना बैठक है, इससे हम क्या सब उम्मीदें रख सकते हैं? और वित्त मंत्री ने वहां कहा है कि एडीबी को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, एडीबी का एज अ रोल इन टर्म्स ऑफ अ डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है और खास करके हमारा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए और भी क्षेत्र में बोलिए, काफी हद तक एडीबी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल रहता है। तो ये देखते हुए जरूरी है कि एडीबी का जितना पार्टनर बैंक है, पार्टनर कंट्रीज है, उसका मजबूती को ले जाया जाए। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आपको शायद पता ना हो, एडीबी का खास करके ताशकेंट, काजाकिस्तान, ये सब जोन्स में जो पहले एडीबी ने कभी अप्रोच भी नहीं किए थे, दीज आर ऑल्सो न्यू एरियाज एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ एशिया, राइट जी। सेंट्रल एशिया का अगर बात करें खास करके, न्यू मार्केट्स, न्यू एरियाज को ऊपर डेवलप करते हुए बुनियादी ढांचागत के रूप में निवेश करें बेशक, और नॉट ओनली इन इंडिया बट एशिया एज अ रीजन अगर ग्रो करता है तो जैसे हम यूरोप को एज अ पावर हाउस समझते हैं, द होल यूरोपियन रीजन यूएस के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चीन और इंडिया मिलकर जहां पे रह रहा है, तो उस पूरा जोन में एक इकोनॉमिक पावर हाउस का एक पूरा रूप से देखना चाहिए एशिया को जी। Moving on, the oil prices rose today but were unable to claw back much of this week's more than 8% decline as demand concerns in major consuming countries continue to weigh. In intraday trade, Brent crude was trading at $72.38 per barrel, while the WTI crude price was at $68.41 per barrel. Gento, this $72.38 is music to, I'm sure, our people sitting at the higher echelons. But at the same time, do you think that this is a very encouraging sign for importers of the commodity like us in India, where crude constitutes a significant share of the country's import bill? Yeah, absolutely. And it's obviously going to give you some headroom of relief. And this is also in continuation to my last week's comment on oil prices, where I said the softness of oil prices are bound to stay, and ever since the rate hike of 25 basis points has happened, this has become a bit more pronounced. Now the fear is for the oil production company, the oil production nations, is if the US recession actually comes true, then it will go in for a free fall. So that's something which we have to look forward to. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति की जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 425 रुपए बढ़त के साथ 61,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई में आपूर्ति वाली चांदी 900 रुपए उछलकर 76,300 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चले तो अंतर्दिवसीय कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $2,052.30 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $25.95 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंतो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Jayento. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices log gain of around 1%. Sensex closes near 61,750 mark. Nifty settles above 18,250 level. Brent crude prices hover around $72 per barrel, and gold price rises to trade around 61,300 rupees per 10 grams for June contract at MCX. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.